We continue the discussion of different devices that are where the knowledge that is derived from pressure and where the pressure knowledge is applicable. तो वो हम discuss करते हैं. Another thing that we use every day is what we call as manometer. मैनोमीटर भी प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक सिंपल डिवाइस बनाई हुई है. यहाँ पर अगर आप उसको पिक्चर में हमने दिखाने की कोशिश की है. द पिक्चर दैट यू सी इज़ अ वेरी सिंपल मैनोमीटर एंड यू कैन सी द प्रेशर डिफरेंस दैट इज़ देयर. तो आपने देखा होगा कि आजकल एवरी अदर डे वी हैव अ वेरी कॉमन डिजीज ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर नापने के लिए भी बेसिकली यही प्रिंसिपल मैनोमीटर वाला ही अप्लाई किया गया है कि ट्यूब है और उसमें अगर हम डिफरेंस को देखें, द डिफरेंस लेवल्स ऑफ 2 पॉइंट्स, then we will see the pressure difference that exists and we say that the resultant जो भी उनमें difference आता है, that is the amount of pressure that is being applied on the subject that we noticed. So a simple U-tube manometer with high pressure applied to the right side. यहाँ पर ये इसमें the difference is that where you see red liquid in the manometer, उसमें liquid है उस वाले manometer में, जबकि the one on the right it has gas in the rectangular container. तो उसमें गैस है और उसके ऊपर जिस वक्त हम फ्लूइड अप्लाई करते हैं, कोई भी फ्लूइड लाइक मरकरी और समथिंग जो भी अप्रोप्रिएट हो, तो वी सी द प्रेशर डिफरेंस एंड फ्रॉम दैट वी मेजर द वैल्यू ऑफ द प्रेशर दैट इज बीइंग exerted on the object under consideration. We notice from the equation, ये हमने शुरू में पहले भी डिस्कस की. अगेन व्हाट इज दिस प्रेशर डिफरेंस? delta P is variation, small variation in pressure. P2 minus P1, it's equal to pressure at point 2 minus pressure at point 1. And if we have to calculate it over a whole region, then from point 1 to point 2, we take the integration that will give us the total pressure, the net pressure. So we notice from this equation that an elevation change of delta Z in a fluid at rest corresponds to delta P over rho G, which suggests that a fluid column can be used to measure pressure differences. A device based on this principle is called a manometer, and it is commonly used to measure small and moderate pressure differences. A manometer consists of a glass or a plastic U-tube containing one or more fluids such as mercury, वाटर, अल्कोहल और ऑयल. तो बहुत सारे लिक्विड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे ब्लड प्रेशर नापने के लिए हम एयर भी यूज़ करते हैं और हम मरकरी भी यूज़ करते हैं. और अगेन बट इट्स ऑलवेज यूज्ड इन अ काइंड ऑफ ट्यूब. दैट ट्यूब इज व्हाट वी कॉल एज manometer. To keep the size of the manometer to a manageable level, heavy fluids such as mercury are used if large pressure differences are anticipated. We consider the manometer shown in the figure that is used to measure the pressure in a tank, for example. Since the gravitational effects of gases are negligible, ये स्मॉल टैंक है या कंटेनर है जिसमें गैस है, उसके ऊपर लिक्विड हमने अप्लाई किया एंड वी वांट टू सी कि गैस उस लिक्विड के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई करती है या वाइस वर्सा, हाउ मच प्रेशर द लिक्विड इज अप्लाइंग ऑन दैट, एंड वेयर द टू balances each other, the manometer will give us the difference in the temperature. The same is the position on the other picture. And since pressure in a fluid does not vary in the horizontal direction within a fluid, the pressure at point 2 is the same as the pressure at point 1. तो पिक्चर में आपको दिख रहा होगा गैस वाले उसमें
कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन पे, क्योंकि 1 और 2 आर एट द सेम हॉरिजेंटल लेवल है, सेम हाइट, and therefore they have to equate. So pressure at point 2 is equal to atmospheric pressure plus rho gh. So, and rho is the density of the fluid that is in the tube. तो ये प्रेशर की वैल्यू, दैट इज़ हाउ वी कंप्यूट एंड कैलकुलेट. और जिस वक्त हमें नंबर्स मिलते हैं तो यानी हम डिटरमिन करते हैं आमतौर से, देयर इज ए मेजरिंग डिवाइस एंड द नंबर्स आर रिटन देयर. एज यू कैन सी on the picture on the left also, the measurements are being shown.